So now I'm going to show you spacing methods of contraception with the help of tree chart. It is a type of AVAIDS which is tree chart. So with the help of this tree chart, I am going to show you spacing methods which is used in the female. So this is spacing methods which is used, spacing methods of contraception in females. So first is chemical method, another is intrauterine devices, and third one is barrier methods, and last is rhythm method. So first we will see the detailed explanation of the rhythm method. तो rhythm methods के अंदर में क्या क्या आएगा? Calendar methods, safe period, time of ovulation, and it is also very necessary to remember the period of danger period, कि कब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है आपको, ये सारी चीज़ें किसके अंदर में आएंगी? रिदम मेथड के अंदर में आएंगी. अब हम देखेंगे बैरियर मेथड्स. तो बैरियर मेथड्स आर द मेथड्स विच आर यूज टू मेक द गैप इन बिटवीन द स्पर्म्स एंड ओवा. It is all comes under the barrier methods. So there are diaphragm, cervical cap. These two are the widely used methods to keep the gap or keep the difference in between the ovum and sperms to prevent the pregnancy or to prevent the fertilization. This is all about the barrier methods. Now we will see the intrauterine devices. So there are various devices nowadays various devices are available to prevent the pregnancy or unwanted pregnancy. Like medicated and non-medicated devices and third generation intrauterine devices are widely used. For example, Copper T, Lippus Loops, Nova and Nova T. So this is all about the intrauterine devices. Then next is chemical method. तो chemical methods के अंदर में आएगा locally applied chemicals. कुछ chemicals होते हैं जिनको particular जो area होता है उस area में apply कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कुछ तरह के drugs होते हैं, जैसे कि steroidal drugs होते हैं और non steroidal drugs होते हैं, जिससे कि जो pregnancy है उससे अपने क्लाइंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे प्रेगनेंसी से बचाया जा सकता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स विच इज यूजिंग इन फीमेल.